Hello students, today we are starting with the first poem in your syllabus, that is A Photograph by Shirley Tolson. Now as the title suggests, here the poet is talking about a photograph. एक photograph की बात कर रही हैं and उस photograph में she is looking at her mother, having a nice time, enjoying her holiday and she is remembering her mother. अपनी mother को याद भी कर रही हैं. Now, let us see how it goes. Read it. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. The cardboard, यहाँ पे cardboard जो है वो photograph के लिए refer किया गया है because the photograph is pasted within a frame. Frame के अंदर है photograph. Now the photograph shows how it was when the two girl cousins went paddling. वहाँ पे इसमें दो cousins हैं, दो girl cousins हैं. They have gone for paddling. Paddling is walking on the sea beach in shallow water. जहाँ पे कम पानी होता है sea beach पर, वहाँ पर जब हम walk करते हैं तो that is called paddling. Each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. तो दो girl cousins हैं जो जिन्होंने poet की mother का hand पकड़ा हुआ है. That means there are 3 girls in all. Total photograph में 3 girls हैं, एक poet की mother हैं और 2 उनकी cousins हैं. And she the big girl some 12 years or so. यहाँ पे she is the poet's mother. She is the eldest of them all. The big girl, वो सबसे बड़ी हैं and her age is around 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और तीनों still खड़ी हैं, सीधी खड़ी हैं and they are smiling to get themselves clicked by the uncle. Uncle जो हैं वो उनकी फोटो खींच रहे हैं and they are all smiling. They are smiling through their hair. Through their hair का मतलब है वहाँ पर हवा चल रही है, a breeze is blowing. So their hair must be all over their face. और उसके अंदर से hair के अंदर से they are smiling. A sweet face my mother's that was before I was born. तो mother का face को वो याद कर रही हैं poet कि she had such a sweet face and that was the incident before she was born, before the poet was born. Obviously जब mother 12 years के around हैं so she was not even married in that photograph. So the poet was not born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पर the poet turns a little philosophical and she compares the eternal state of nature with the you can say transitory state of human beings. यहाँ पे the sea appears to have changed less. Now the poet says that the nature in all it does not change much. अगर हम बहुत सालों बाद भी देखें sea को तो it appears more or less the same. Change नहीं होता कोई खास sea में. Nature में इसी तरह से change नहीं होता. But we humans, we change a lot. As we age, as the time passes, we have a tendency to change a lot. Physically also and otherwise also. And transient. Transient word means something temporary, which does not last long, which does not stay forever. So, यहाँ पे transient feet is symbolic of the state of human beings on earth. कि human beings जो हैं वो earth पर हमेशा के लिए नहीं हैं. They are not here forever. They pass their life. They pass through their life period and then move on to another world. But the nature, the sea is here to stay. It does not move on. It does not change much. Next stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Now, यहाँ पे poet बात कर रही हैं, mother की ही बात कर रही हैं कि 20-30 साल बाद 20-30 years later जब poet पैदा भी हो गई थी, poet grown up थी, तो mother के साथ जब वो बैठती थी
तो मदर यूज टू लाफ एट लुकिंग एट द फोटोग्राफ. मदर जो है बहुत खुश होती थी फोटोग्राफ को देखकर. एंड व्हाट शी यूज टू से, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और वो कहा करती थी, वो कजन्स के नाम बोला करती थी, बेटी एंड डॉली, और बोला करती थी कि देखो किस तरह से हमने फनी कपड़े पहने हैं बीच पर जाने के लिए. हाउ बेटी एंड डॉली मेड अस wear funny clothes for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Now here the poet turns a little sad. The mood is of sadness. वो कह रही हैं कि जो जब मदर सी हॉलीडे ये फोटोग्राफ देखा करती थी तो वो सी हॉलीडे को याद करती थी. दैट वाज हर पास्ट, वो उनका बचपन का फोटोग्राफ थी. एंड माइन इज हर लाफ्टर, उनकी जो हंसी है, उनका जो लाफ्टर है, वो पोएट के लिए पास्ट हो चुका है, अ थिंग ऑफ पास्ट हो चुका है. दैट मीन्स वी गेट एन आइडिया दैट द पोएट्स मदर इज नो मोर. पोएट की मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है. एंड बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. यहाँ राय वर्ड मीन्स हैविंग अ डिसअपॉइंटेड लुक, a little feeling a little disappointed. तो both मतलब मदर के लिए भी यूज हो रहा है और पोएट के लिए भी यूज हो रहा है कि जब मदर देखा करती थी अपना सी हॉलीडे की फोटोग्राफ तो उनको एक सेंस ऑफ लॉस होता था. सेंस ऑफ लॉस किसका? चाइल्डहुड का, कि चाइल्ड बचपन में हम कितने मजे करते थे. एंड शी यूज टू गेट नॉस्टैल्जिक रिमेम्बरिंग हर चाइल्डहुड. तो वो थोड़ा सैड हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी. इसी तरह जब पोएट अब जब पोएट मदर की फोटोग्राफ देखती हैं तो वो भी, उनको भी एक सेंस ऑफ लॉस आता है क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को लूज कर दिया है, उनकी मदर अब नहीं है. तो वो सैड फील करती हैं, वो भी डिसअपॉइंटेड फील करती हैं. शी मिसेस हर मदर सो मच. द लास्ट स्टैंजा नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. तो अब शुरू में फर्स्ट स्टैंजा में इफ यू रिमेम्बर उन्होंने मदर की एज बताई थी अराउंड 12 इयर्स. तो अब लास्ट स्टैंजा में वो कह रही हैं कि उतने ही साल हो चुके हैं मेरी मदर को गए हुए, मदर को की डेथ को. तो दैट मीन्स अराउंड 12 years बैक हर मदर डाइड. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस कौन सी सिचुएशन? मदर की डेथ की सिचुएशन. आफ्टर हर मदर, आफ्टर द लॉस ऑफ हर मदर, there is nothing to say at all. The poet feels so sad that she has no words to say about it. She has no words to describe this. So वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं because she is feeling very sad. And it's silences. तो एक silence सा उनको encircle कर लेता है, surround कर लेता है poet को whenever she remembers her mother and she feels lost in her memories. So she becomes totally silent. So towards the end, there is a feeling of sadness in the poem, and that is the theme of the poem. So that's all. Now I will also send you the PDF of question answers and RTCs also, reference to context also. So note it all down in your notebooks. और एक चीज और, आपको पोएट का नाम जरूर याद रखना है. जहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे आप नोटबुक्स के टॉप पे पोम का नाम लिखेंगे, साथ ही उसी के नीचे पोएट का नाम जरूर लिखिए. बिकॉज आरटीसी में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, नेम द पोम एंड द पोएट. तो पोम का नाम भी आपको याद होना चाहिए, पोएट का नाम जरूर याद होना चाहिए. ओके, सो नाउ आई विल सेंड द पीडीएफ, नोट इट डाउन, and in case of any doubt, you feel free to contact me. Thank you.